Okay, so hi, I am Vishwas Kumagar, Google Student Ambassador for Malwa Institute of Technology, right? Do you have a few minutes? Yes, Okay, तो आपने प्री सर्वे फॉर्म सबमिट कर दिया है ना? yes, sir. Okay, perfect. So new semester is right around the corner. Honestly, how are you feeling about it? Are you excited? Yeah, I really excited about the new semester. I Okay, think it's very informative and effective for my upcoming career. okay, okay. So, yeah, I'm So quite right. So what's excited. the part of studying that drain you the most? Getting your notes organized, actually revising और knowing whether you have really understood something, right? मतलब कि आपको कौन सा स्टडी का पाथ है जिसमें आपको दिक्कतें आती है नोट्स बनाने में या फिर पढ़ाई करने में या फिर उसकी स्टडी गाइड के लिए ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसमें आपको डिफ़िकल्टीज फेस होती है? Like whenever I'm study, the most important part in studying, like making the notes that we watch something very information no lectures that we need to remember, so I need to write down. So that's the thing that drains me out in the long session. Okay, so do you remember when was the last time you sat down to study and had zero clue where to even begin? मतलब कि ऐसा आपके साथ कभी हुआ है कि आप पढ़ाई करने बैठे हो और आपको यही नहीं पता है कि आपको कैसे स्टार्ट करना है, क्या चीज़ पढ़नी है, इसके की कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं या फिर क्या चीज़ें करनी है? ऐसा हुआ है आपके साथ Yeah, कभी? sometimes I feel that I am stuck at that moment. I don't know what to do, but I'm trying to sit and figuring out what to do and what not to Okay, do. great, great, great. Okay, so basically you need something that help you organize, test yourself and does not make you retype your whole textbook, right? So you know about Google Yeah, I heard about it. and you know about the AI mode in Google. I'm not sure about the Okay, AI so model. let me clear you. So there's the mode inside it now called AI mode, right? It's not just a search anymore. It's got features built in for exactly this kind of stuff. ठीक है, आपको पढ़ाई करने में जो भी मदद लगेगी वो AI मोड से आप कैसे इनहेंस कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ. तो कैन यू शेयर योर स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन? Uh, can I share the screen now? ओके, प्लीज़ शेयर योर स्क्रीन. Mm. Okay, okay, seeing your screen. So the Open screen is Google, present. open Google home screen and then open AI mode. Click on AI mode. AI mode. Shall I need to update my Google? I think okay. So write AI mode in the search bar. Okay. Yes. AI mode. Okay. Google. Right. Then click. Okay. Great. So Yeah, I got a topic to entered in revise, the but no structure. Google AI Okay. Wait. mode. Wait. One. Am I audible? Yes. Yes. You are audible. So okay. So the AI mode is started. So write a prompt. Create a study Yep. guide. Create a study guide for राइट. और यहाँ पे आप अपना टॉपिक लिख सकते हो जिसके बारे में आपको स्टडी गाइड बनानी है. एनीथिंग. ओके. एंड कवरिंग द की कॉन्सेप्ट आई नीड फॉर माई एग्ज़ाम. ओके, देन एंटर. ग्रेट. सो हाउ मच टाइम दिस सेव्ड, राइट?
जैसे कि आपने देखा, आपको पूरा स्टडी गाइड मिल जाएगा। जैसे कि आपने वीडियो एडिटिंग के बारे में पूछा है, कैसे आपको रिजोल्यूशन, टेक्निकल चीज़ें सब इसने बता दी है, राइट। सो अब दिक्कत Yeah. कहाँ आती है कि आपने पढ़ तो लिया, बट आपको कितना नॉलेज है ये हम एआई से पूछेंगे। कैसे पूछेंगे, राइट। सो लेट्स से यू हैव सबमिटेड समथिंग बट यू आर नॉट श्योर इफ़ यू एक्चुअली रिमेंबर इट। सो वी हैव अ क्यूज फीचर इन इट। ओके, सो राइट अ प्रॉम्प्ट, Yep. क्यूज मी on or and write your topic. Okay, and write so I can check if I really understood it. Then enter. So see, the AI generated cues for you, जिससे कि आपको पता लगेगा कि आपको कितना नॉलेज है और कितना नहीं, राइट। जैसा कि आप देख सकते हो। So honestly, don't you think it help you revise better? Okay, so मीट पे आ सकते हो आप। Okay. So how do you think about this AI mode? Can you explain me? क्या आपको ये हेल्पफुल लगा? Yep, I think it's pretty much save my time, and I think it will also help to become me efficient and be productive in the upcoming new session. Okay, So so would you try it that's for where, your studies? yeah, I definitely try for my study, and it's very helpful when I'm taking my notes and giving the quiz related the topic. Okay. So yeah, it's very helpful. Okay, so last thing before you go, can you fill the post survey form? Yeah, I definitely Okay. fill the post Good survey luck. post. Hmm. Thank you. Thank you for the meet.